So we are here to discuss another topic, that is production of hydrogen on large scale. So how is hydrogen produced on large scale? That is produced by a process called as Bosch process that we are going to study today. So Bosch process is used for production of hydrogen in industries. Industries में a lot of hydrogen is needed. ठीक है? So to meet that level of production, कहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. देयर आर थ्री स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप इज प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस. व्हाट इज वाटर गैस? वाटर गैस इज दिस, द मिक्सचर और द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं. जस्ट अ सेकेंड. यस. So in the first process, in the first step, what do? We produce water gas. How? This is C, that means carbon, and this is water in the form of steam. Steam की form में water है. What are we going to do? We'll pass steam from carbon. Carbon से that is taken from coke. So from that carbon we'll pass steam at what temperature? At 1000 degree Celsius temperature. इतने ज़्यादा temperature पे when we'll pass steam from carbon तो क्या होगा? It will change into carbon monoxide and hydrogen. It will form a mixture of carbon monoxide and hydrogen. So mixture of carbon monoxide and hydrogen is called as water gas. Alright. Besides this, a lot of heat is released that I have shown here in the form of a symbol. कौन सा symbol होता है heat का? It is triangle, right? So here a lot of heat is also released. But what is the problem now? यहाँ पे hydrogen gas is formed. So why don't we take this hydrogen? Why don't we use this hydrogen? That is because it is very difficult to take out this hydrogen from carbon monoxide. Carbon monoxide के mixture में से हाइड्रोजन को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो क्या करेंगे अब? वील सिंपली इन द सेकेंड स्टेप व्हाट वील डू, वील चेंज दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर में से निकालना डिफिकल्ट है. सो वी आर जस्ट चेंजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. हाउ? अगेन वील टेक दिस वाटर गैस मिक्सचर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और सेम स्टीम वी आर गोइंग टू यूज. We'll pass steam from this mixture. When we'll pass steam from this mixture at temperature 400 to 450 degrees Celsius, then what will happen? This carbon monoxide will change into carbon dioxide and hydrogen will be left behind. ठीक है? So अब यहाँ पे carbon dioxide has been formed. Now only one step is left, that we need to take out this hydrogen from carbon dioxide. हमें हाइड्रोजन को अब कार्बन डाइऑक्साइड से निकालना है. Also one more thing, in this process a catalyst is used. Which catalyst? Iron chromate. Iron chromate is used as a catalyst in the second process, and promoter is used, chromic oxide is used as a promoter. प्रोमोटर की तरह कौन काम कर रहा है? क्रोमिक ऑक्साइड. यू बाय नाउ यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड अ प्रोमोटर. कैटलिस्ट का क्या काम होता है? इट कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है. बट व्हाट अबाउट द प्रोमोटर? विच एवर द कैटलिस्ट बी, प्रोमोटर का काम क्या होगा? इट विल एनहांस इट्स वर्किंग. जो कैटलिस्ट की वर्किंग है उसको एनहांस करेगा. ठीक है? बेटर करेगा. So now in the third process, third step, what we have to do? We have to separate hydrogen from carbon dioxide. Carbon dioxide से hydrogen को separate करना है. तो what we will do? We will pass this mixture, carbon dioxide and hydrogen के mixture को we will pass through water. किसमें से pass करेंगे? Water में से pass करेंगे at temperature at pressure 30 atmosphere. 30 atmosphere pressure पे we will pass this mixture carbon dioxide and hydrogen through water. water से pass करेंगे at 30 atmosphere pressure. इस pressure पे what will happen? Actually जो carbon dioxide gas है
it will get dissolved in water. Water में dissolve हो जाएगी and what will be left behind? Hydrogen gas will be left behind. Okay, so carbon dioxide will dissolve in water and what will be left? Hydrogen will be left, and this hydrogen will be collected in the cylinders. Cylinders में collect कर लेंगे, then it will be used whenever it will be needed. So also अब इसकी जगह, water की जगह, what else can we use? We can use other compounds also. One most common compound that is used is KOH. Potassium hydroxide is also used. So this was about your production of hydrogen gas on large scale. Okay, and this is the wash process, which is a very important process, and this contains 3 steps which we have discussed already. I hope you all get it. Thank you. Have a nice day, everyone.